today Rahul Gandhi turned 54, and given that the birthday comes close on the heels of the Lok Sabha results, there were double celebrations within the Congress. Small functions were organized at the Congress headquarters where flowers were given to Rahul Gandhi, a cake was cut. Several party workers also independently conducted donation drives. A massive cutout of Rahul Gandhi was felicitated in Hyderabad, showered with rose petals. And the message through all of this was simple. Rahul has arrived. From a once reluctant politician to now being hailed by the Congress as Jan Nayak, it's very evident that today Rahul Gandhi is the face of the party, and already demands are being made that he take on the mantle of leader of opposition and maybe one day be the Prime Minister. कांग्रेस में जन जन की इच्छा, हर कार्यकर्ता की है राहुल जी प्रधानमंत्री बने। हम सब चाहते हैं कि वो देश की बागडोर संभाले, परंतु ये तो निर्भर करता है राजनीतिक परिस्थितियों पे। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की उन्होंने यात्रा की, उसके बाद जो ये चुनाव हुआ, तो वो एक महानायक के रूप में उभरे और देश के सर्वाधिक लोकप्रिय अगर आज कोई है तो राहुल गांधी जी। जो राहुल जी ने जो संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए लगातार लड़ाई लड़े, किसी के ना झुके नहीं है। तमाम सालों से जो मणिपुर इंसिडेंट हो, किसान आंदोलन हो और फ्लड हो, तमाम इशू के वजह से जन्मदिन नहीं कर पाए थे, राहुल जी सेलिब्रेशन नहीं कर पाए थे। तो इस बार पूरा देश का जनता भी, कांग्रेस कार्यकर्ता हटके भी पूरा, कुछ लोग सड़क पे, कुछ लोग सोशल मीडिया में उनका किस तरीके के उनका लोकप्रिय बढ़ गया, जननायक बन गया, वो सारी देखने को मिल रहा है। But the BJP took this opportunity to again ask, what is the celebration for? Since the 4th of June, the Saffron Party has called Rahul Gandhi third time fail because of the Congress's failure to form a government for the third consecutive time under his leadership. Added to that today was the new moniker of Mehngai Man. In fact, the very Rahul model for the Congress is being questioned. What does this model include? The multiple examples quoted are the Khatakhat 1 lakh rupees per annum promise. 2. The multiple guarantees made across states which are election bound by the Congress. The most glaring example of this model is Karnataka, where fuel prices have already been increased and now a hike in monthly water charges is also being mulled in order to finance the Congress's guarantees and development work. And finally, the allegation of fakery, whether it be the claim that mobile phones were used to unlock EVMs in Maharashtra or the latest example of the Congress amplifying the fake claim of a NEET aspirant. So the question is, from a reluctant politician to Jan Nayak, has Rahul Gandhi finally taken on the leadership role in the Congress? Has 2024 signaled the arrival of Rahul Gandhi, or is this a hype, an over-exaggeration and a premature celebration by the Congress of anointing him it's Jan Nayak? Joining us on the debate today, Sanju Verma, national spokesperson of the BJP, Sameer Chaugankar, senior journalist, Tehseen Poonawala, political analyst, Varun Purohit, political analyst, and senior journalist Neeja Chaudhary. I will start with the non-political voices first. Neeja Chaudhary, do you see a distinctive change in the body language, in the attitude of Rahul Gandhi? Congress is saying he is our Jan Nayak. Is the reluctant politician now at least on his way to becoming Jan Nayak, if not already one? Yes, I think many people will want to wish Rahul Gandhi, good wishes on his birthday, and certainly the Congress is celebrating it. And as far as the body language, yes, and the Congress workers and Congress leaders respect him much more than they did in the past, and clearly he's retaining Rai Bareli, and what is following after that shows that he is going to be their prime ministerial choice whenever that choice has to be made. So all that is, he is the leader. I don't think it's anyone else. That much is becoming clear.
Now, as for, it's a long way to go still, as the BJP has said, and BJP naturally will say that, if for the third time in succession, you have not led your party to victory. Of course, the Congress is very happy, it's doubled its numbers, its vote share has gone up. Somebody talked about the Bharat Jodo Yatra, yes, those 4,000 kilometers that he walked had everything to do with him, not to do with, the Gandhi family name. So that's where he redeemed himself in the eyes of people. Okay, long way to go, but at least the journey has started. Sameer Chaugankar, Jannayak या third time fail? On Rahul Gandhi's birthday, आपको क्या लग रहा है? कौन सा उनका डिस्क्रिप्शन आप बैठता है? देखिए प्रभजा, मुझे लगता है राहुल गांधी जब 34 साल की उम्र में सांसद पहली बार बने थे, उसके बाद राहुल गांधी के पास 10 साल का समय था 2004 से लेकर 2014 तक, जब कांग्रेस केंद्र में सत्ता में थी। राहुल गांधी उस समय कांग्रेस को कोई दिशा निर्देश दे सकते थे। लगता है कि वो केंद्र सरकार को दे रहे, जब इतना करप्शन का आरोप था, राहुल गांधी अपनी सरकार को जो मनमोहन के नेतृत्व में चल रही थी, उसे करप्शन से वो बचा नहीं पाए। और देखिए, जब उसके बाद जब वो सत्ता से बाहर हुई, तो राहुल गांधी 2017 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तब भी पार्टी को मुझे लगता है कि दिशा निर्देश देने में असफल रहे। 2014 में राहुल गांधी चाहते तो विपक्ष का नेता तो हालांकि बीजेपी ने बनाया नहीं था, लेकिन पार्टी में सदन के नेता बन सकते थे। वह जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे को दे देते हैं। 2019 में फिर वो संसद में यह जिम्मेदारी लेने से बचते हैं और यह जिम्मेदारी अधीर रंजन चौधरी को दे देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को जब भी जिम्मेदारी लेने का मौका आया, राहुल गांधी ने जिम्मेदारी लेने से बचते रहे। पर अब 2024 में तो ले रहे हैं, हो सकता है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाए। 2024 तो एक डिफरेंट स्टोरी हो सकती है। अभी कहां है? अभी कहां राहुल गांधी ने कहा? राहुल गांधी ने अभी नहीं कहा है कि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने जा रहा हूं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पास किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि राहुल को अगर मैं नोटिस दे दूंगा, अगर राहुल लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए, राहुल गांधी के पास इतना बड़ा एक पारिवारिक बैकग्राउंड रहने के बाद वो पार्टी के अंदर लीड लेने की स्थिति के अंदर नहीं पाए। अभी भी वो जिम्मेदारियों से भागते हैं। मुझे लगता है कि देखिए, इस उम्र में तेजस्वी यादव को देखिए, 34 साल में तेजस्वी यादव ने बिहार में किस तरीके से अपनी पार्टी को संभाला और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को नाको चने चबवा दिए बिहार के अंदर। अखिलेश यादव से 3 साल छोटे हैं राहुल गांधी से। उत्तर प्रदेश में 37 सीटें लेकर आ रहे हैं और वहां पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। Okay, let's just bring in Sanju Verma also. Even if the strike rate, as it were, isn't perfect, is not close to the Prime Minister, but Sanju Verma, एक बार कुछ जैसे सीटें डबल होती हैं, confidence, body language has changed. It may be a work in progress, but Rahul Gandhi, there has been a perceptible change. I just want to show you a few examples of how he has tweeted on his birthday. He was responding to Tejasvi Yadav, विशिंग हिम बर्थडे। व्हाट डज ही से? आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद भाई तेजस्वी यादव। अगला लंच कतला या रोहू? He obviously is referring to that infamous video where along with Mukesh Sahni, Tejasvi Yadav was holding up a fish. When responding to Akhilesh Yadav, he said, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद अखिलेश यादव। यूपी के 2 लड़के हिंदुस्तान की राजनीति को मोहब्बत की दुकान बनाएंगे, खटाखट खटाखट। तो एटलीस्ट ही इज ऑन द रोड। ही इज नॉट द पप्पू यू कॉल्ड हिम फॉर 10 years एनीमोर। कॉन्फिडेंस तो है। पद्मजा जी, आज मैं विक्टिम कार्ड खेलने वाली हूं। आज विक्टिम कार्ड खेलने का बहुत मन कर रहा है। आई नेवर डू इट, बट टुडे आई एम गोइंग टू डू इट एंड डू इट ब्रेजनली। माय विक्टिम कार्ड इज दिस: नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर फॉर द 3rd time running. Despite a so-called perceived anti-incumbency, he is the first prime minister since 1962, the first prime minister in 62 years to take charge of the world's largest democracy for the 3rd time running. But हमें क्या कहा जा रहा है? आपके 240 में वो बात नहीं है, but पूरी की पूरी dot alliance, a combination of more than 20 odd parties, they together notched up 234. वाह जी वाह, क्या तरक्की की है। फाइन, बीजेपी saw मेजर डिक्लाइन इन इट्स टैली इन उत्तर प्रदेश। हम तो मानते हैं कि हमको आत्मचिंतन करने की जरूरत है, बट लुक एट द मैनर इन विच द नाइव्स आर आउट। लोग बोल रहे हैं आपको तो सिर्फ 33 सीटें मिली हैं, बट द कांग्रेस हैज गॉट 6 सीट्स। वाओ, अ रॉयल स्कोर ऑफ 6 दिस टाइम। लेट्स क्रेडिट प्रियंका गांधी वड्रा एंड राहुल गांधी फॉर द phenomenal performance in Uttar Pradesh. Look at Narendra Modi, the only leader who has actually managed
to convert anti-incumbency into pro-incumbency. Look at Yogi Adityanath, the only chief minister in 37 years to come back for the second time. Look at the BJP, the only party to come back for the second time in Uttarakhand in 27 years. But आज पद्मजा जी कह रही है राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए। अरे उनका बर्थडे है, मोदी जी का बर्थडे होगा, मैं उनको भी कहूंगी कि भाई आप तीसरा टर्म लेकर के आए हैं, थोड़ा तो बर्थडे पे बी काइंड। Look, Neerja ji rightly said, and it's slightly nuanced and gray. The fact is that Rahul Gandhi has momentum, and politics, more than about numbers, is about chemistry and momentum. And after that 6,000 kilometers that he walked in the Bharat Jodo Yatra, this is the first Yatra, and of course the second, the Bharat Nyaya Yatra, he's connected with the people on the ground. So he built up a momentum. Yes, the Congress has not touched the BJP tallies. It's obvious. But the BJP was aiming at 370 plus and have ended up at 230 odd. The Congress, the entire India Alliance was aiming at 290. They've ended up at 230. So the loss has been much less. Also, the Congress contested much less seats. But I do agree with something Sameer ji said, and I have advised this to Rahul ji. I think it was a mistake that Rahul ji made in UPA 2 when he was not a member of the cabinet. I do believe this very firmly. And I do believe that he has an opportunity now to be LOP, and he must grab it. He's right about Tejaswi ji and Akhilesh Yadav ji that they've taken this opportunity. Rahul ji needs to take it. So I think that is as so far as the future is concerned, because all of us Congress voters like me want to see Rahul ji in that position. But again, let's come to the base. The base is that here is a prime minister who believed that anything he touched, he had the Midas touch, he could do anything he wanted. What Rahul Gandhi has managed to do is slow down the BJP. You will now no longer have a prime minister coming on Times Now at 8 p.m. and doing demonetization or a lockdown. That cannot happen. And now that cannot happen, there's a slowdown in how this would, how authoritarianism is taken over. I think it's a major sigh of relief for millions of us who are uncomfortable with BJP. Should the BJP even the third time, I have no problem with it. The problem is BJP's authoritarianism, and that's what Rahul Gandhi has managed to do. Let's also remember one fact as we end today. The BJP has spent millions and millions in spoiling and tarnishing Rahul Gandhi's image. The most famous video is the Alu But Sona. that makes him a speed breaker, not a Jan Nayak. I mean, at best, he's a speed breaker who has slowed down Mr. Modi a little bit, but he hasn't stopped him. Mr. Modi is still going, third term. Absolutely. And therefore, yes, he slowed down Mr. Modi, but at the same time, Mr. Gandhi has momentum. If Mr. Gandhi can continue the momentum along with becoming LOP, he has a chance to trip the BJP in 2029. Okay, respond to this, Sanju Verma. Abhi to sirf jhanki hai, momentum, age on his side, and he's going to trip you in 2029. Let me quote one more statistic, by the way, which is the Bharat Jodo Yatra. It covered 71 Lok Sabha constituencies, and of this, Congress contested 56 seats and it won 23. So Bharat Jodo Yatra did yield them dividends, और उसका श्रेय तो सिर्फ राहुल गांधी को जाता है. Okay, अभी victim card तो खेल लिया. अभी now let me buttress my argument with some more facts. You know, जो जननायक की इनको उपाधि दी गई है, माननीय आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को, let me tell your audience that जननायक की उपाधि उसको दी जाती है who has a pan India presence. कांग्रेस का स्कोर कार्ड सुनिए. लोकसभा 2024 में इन 10 सेकंड्स 0 सीट्स इन लद्दाख, 0 इन जम्मू कश्मीर, 0 इन दिल्ली, 0 इन मध्य प्रदेश, 0 इन दमन दीव, 0 इन दादरा नगर हवेली, 0 इन हिमाचल प्रदेश, 0 इन उत्तराखंड, 0 इन अरुणाचल प्रदेश, 0 इन मिजोरम, 0 इन त्रिपुरा, 0 इन आंध्र प्रदेश एंड 0 इन अंडमान एंड निकोबार. पहली बात, राहुल गांधी डज नॉट हैव पैन इंडिया प्रेजेंस बिकॉज 14 राज्यों में या यूनियन टेरिटरीज में कांग्रेस का स्कोर कार्ड वाज अ बिग डक. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, I believe, you know, there's this famous movie, I'm sure, I don't know if you've seen it, The Curious Case of Benjamin Button. The character was played by Brad Pitt, where he says, our lives are defined by opportunities, even those that we miss. And the Congress and Rahul Gandhi have never lost an opportunity to miss an opportunity. And I'll tell you why. Bharat Jodo Yatra, Bharat Nyaya Yatra, ये सब तो सही है. But I believe, Padmaja, and this I'm saying with sincerity, I'm not being sarcastic. To be a leader of the world's largest democracy, forget about the fact that you need to have a modicum of gravitas. What I don't like about Rahul Gandhi, what I abhor about him is this is a man who does not take pride
in the idea of India. यहां बैठकर आप कहते हो संविधान खतरे में है, गणतंत्र खतरे में हो, Okay. है, you go to Cambridge and you say that the very idea of democracy is coming undone in India, and why are the United States of America and the European Union quiet? You are basically inviting foreign powers to engage. But Sanju Verma, if that is the image he chooses to sculpt for himself, people are buying into that image, or at least are beginning to buy into that image. So you are saying that, oh, you know, he's against India, he's casteist, he's silly, he's non-serious, but all of those charges are not sticking to that image. You'd agree? Padmaja, very respectfully, I beg to disagree with you. I did not call him silly, but yes, I have often tweeted calling him a pappu, and that moniker is not about his mental IQ or his emotional IQ. Let me ask you one thing. You keep saying body language ऐसी है, फलाना वैसा है. Today you've been using some flattering adjectives for him. I want to ask you one thing. When was the last time the Congress managed to get more than 240 seats? Okay. 1984. When was the last time the Congress managed to get more than 230 seats? It was 232 in 1991. अरे तीसरी बार फेल हो चुके राहुल गांधी की कॉज को पद्मजा जोशी जी इतना क्यों उभारने में लगी हुई है, मुझे ये जानने में दिलचस्पी है. Okay, Varun Purohit, I have absolutely no interest in trying to rescue his cause. I am simply saying if he's doubled his seat, double तो हुई है, that neither I can change, and I have shown the strike rate as well. I have quoted data from Bharat Jodo Yatra also. But at the end of the day, 99 is 99 and 240 is 240, Varun Purohit. आप उसको चाहे जितना hype कर लें, जितना celebrate कर लें, है तो वो third time fail, says Sanju Verma. पद्मजा जी, एक मानसिकता, एक सोच 10 साल में डेवलप करने की कोशिश करी है कि जैसे बीजेपी, आज की बीजेपी की बात कर रहा हूं मैं, जो मोदी सेंट्रिक बीजेपी, अटल जी अडवाणी जी के युग की बात नहीं कर रहा हूं. ये जैसा सोचे, जैसे सोचे, आज आपने राहुल गांधी की जरा सी तारीफ नहीं खाली कि एक प्रेजेंटेशन कर दिया, उसमें इनके जलना, कुड़ना, परेशान होना शुरू हो गए. आज सबसे बड़ी बात जननायक की बात आप कर रहे हो. राहुल गांधी तो आज सारी जितनी भी आप चर्चा करते हो, कितनी डिबेट्स करते हो, बीजेपी दिन भर जिसको कोसती है वो राहुल गांधी है. तो अगर सारी राजनीति का केंद्र बिंदु राहुल गांधी है तो जननायक कैसे नहीं? पूरा देश की चर्चा का विषय राहुल गांधी. बीजेपी के दिल में राहुल गांधी, दिन भर सुबह उठते रात तक राहुल गांधी करते. तो इससे बड़ा आदमी का क्या होगा चर्चा? दूसरी बात, जो अब सेलिब्रेशन की बात है, हाइप की बात है, देखिए इमोशनल अटैचमेंट है, सब किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं. हमारे राजस्थान में एक शब्द होता है खोड़ला, आप तो समझते हो पद्मजा जी. तो अगर खोड़ले लोगों का जवाब देंगे तो कैसे होगा? ये सेलिब्रेशन करें, कुछ युवा इनका बेरोजगारी दिवस के नाम से सेलिब्रेशन करते हैं, वो अलग पॉइंट. हमको अगर हमारे नेता का, हमारे परिवार का अगर सेलिब्रेशन करना है तो हाइप कैसे हो गई? ये हाइप की जो मानसिकता है, हमारे यहाँ पे पॉम्प एंड शो का देवता नहीं आया कोई परमात्मा के यहाँ से, जो बायोलॉजिकल ही नहीं है. एक देवता उतर के आए और पॉम्प एंड शो इवेंट कंपनी करे, ऐसी सोच हमारे यहाँ नहीं है. हम राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि भी मनाते हैं, जन्मदिवस भी मनाते हैं. तीसरी बार आप सरकार बनाने में असमर्थ रहे हैं, उसी में आप खुश हो रहे हैं कि भाई तीसरी बार हमने सरकार तो नहीं बनाई बट हमारे 99 आ गए, हम खुश हैं. आप सेलिब्रेट कर क्या रहे हैं? नहीं क्यों खुशी नहीं मनाए किसी चीज की आप में? नहीं, दिन भर दुख मनाए, खुशी नहीं मनाए. ये क्या यही तो कह रहा हूं, ऐसी कैसी मानसिकता है? हम जो है मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, खुशियां बांटते हैं. अच्छा. हम किसी को कोसते नहीं, दिन भर उठ करके किसी परिवार को कोसते जाएं. आपने किसी के लिए कुछ कह दिया तो उससे जलते जाएं, कुड़ते जाएं. ये जो मानसिकता मैंने कहा ना 10 साल में क्रिएट करने की कोशिश की गई, ये पूरे देश के लिए, समाज के लिए गलत, खतरनाक है पूरे समाज के लिए. ओके, ठीक है. आप जनरली सेलिब्रेटरी मूड में. जस्ट अ सेकंड, नीजा चौधरी, इज देयर अ लैक ऑफ सीरियसनेस? व्हाट एवरीवन पॉइंट्स आउट दैट फाइन, today you are saying he has done better than earlier, but how long will this last? Will he stay the course? Is there that gravitas, as Sanju Verma said? Yeah, just a word on Sanju. Sanju always does her, work on homework on facts and figures, and as always, she's quoted 1984, 1991, Uttarakhand, the strike rate, all her facts are absolutely right. But today, I wish Sanju Verma would really extend her greetings to Rahul Gandhi on his birthday. At least I feel, even adversaries, ye kar dena chahiye. As for the other thing, gravitas, I also think that he should take up LOP if he's going to be the
prime ministerial candidate, and every decision that's taken in the Congress party has his stamp today. People know that. Therefore, he must come forward and take that responsibility in Parliament, lead his party, and that will mean dealing with the government, that will mean Business Advisory Committee, that will mean dealing with the entire opposition, a whole host of experience that anybody who aspires to be Prime Minister of India should have. And it will be disappointing if he does not take this up and gets cold feet or decides for whatever reasons not to do it again. Because, to be leader, you must be accountable also. But do you think he has that gravitas to do that right now? That he has decided he's in it for keeps? Not that, okay, this was a great trip, now I'll see you after the break. Well, I think he's evolved a lot, so why should we prejudge him? Does he have the gravitas? Okay. Why not? I mean, people do evolve. Okay, fair enough. Samir Chaukankar wanted to come in, then I'll come to you, Tehseen. देखिए पद्मा जी, मुझे लगता है कि आज राहुल गांधी का बर्थडे सेलिब्रेशन करने का हक तो बनता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीद थी उससे बुरा प्रदर्शन किया है, कांग्रेस ने जो उम्मीद थी उससे बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। देश की जनता ने कांग्रेस के प्लेन को टेक ऑफ की मोड पे ला दिया है। अब यहां से राहुल गांधी और कांग्रेस पर निर्भर करता है कि वो इस टेक ऑफ को कैसे लेकर जाते हैं अपने जो जनता ने दिया है। मुझे लगता है कि इस बार के जो 5 साल का जो सत्र रहेगा 18वीं लोकसभा का, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। प्रियंका गांधी भी लोकसभा जीतकर वायनाड से पहुंच जाएंगी, अखिलेश यादव रहेंगे, राहुल गांधी रहेंगे। विपक्षी नेता राहुल गांधी अगर बनते हैं तो मुझे लगता है बड़े मुद्दे उठाने की स्थिति आएगी। तो इस बार 2014 और 2019 का जैसा विपक्ष रहा था वैसा नहीं, विपक्ष बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी भी पूर्ण बहुमत में नहीं है, एनडीए के साथ में है। तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से इस बार चुनौतियां दोनों को है। देखते हैं राहुल गांधी कैसा प्रदर्शन करते हैं वहां पर, और यही 5 साल राहुल गांधी का अगले 5 साल का भविष्य तय करेंगे। अगर राहुल गांधी बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो यह तय कि 2029 के अंदर राहुल गांधी एक बड़े चुनौती बनकर भारतीय जनता पार्टी के लिए उभरेंगे। राहुल को यह मौका मिला है, इस बार जो जनादेश मिला है, राहुल इसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं अगले 5 साल के लिए, यह देखना दिलचस्प होगा। Okay, so at least people have brought the Congress's plane onto the runway. Will it take off depends entirely on whether the pilot stays in the cockpit or he says, I'm just going to go for a break and come back. But Tehseen Poonawalla, the Rahul model, now that itself is being questioned. You've got Khatakhat. You have got the Karnataka guarantee model. Already it is creaking, it is leaking at the seams. You have got the model of outright fakery, where a newspaper report was relied upon to say कि भाई OTP से phone आप connect करके hack कर दोगे. Is this Rahul model sustainable? Tehseen Poonawalla. No, I think what the Rahul model is actually empathy for the common man. And I saw this personally in Bharat Jodo Yatra. And of course, when I know him, I do know him on a personal level. He's an extremely empathetic man. He does come across as somebody who cares about people and the common man's problems. And I think that is completely and totally different from the Honorable Prime Minister's approach. The Prime Minister seems extremely high-handed. There's also one more thing. Look, I don't want to get into calling the Prime Minister names as names are being called on this show to Rahul Gandhi. But the Prime Minister, in my opinion, is a twin personality. You have a Prime Minister who carries India very well abroad with a lot of charge, a lot of positivity. He speaks well about India. And then he comes to India and he does Machli, Mangal Sutra, Mutton, Bhais, Mujra. So you can also have that model and say, does that behove the Prime Minister of India? And I think that's a legitimate question. No, but if you're talking about the empathy for the common man, it's the common man who is going to pay more for petrol and diesel in Karnataka. It's the common man who's going to pay more for water if the water tariff is actually hiked, as is being contemplated right now. Can this be a Rahul model which is sustainable? No, but the Rahul model can be that the due share of states should be given to it by the union government. The government not sit on the money. The Rahul model can be that petrol can actually be bought under GST. Why are they not doing it? Because the union government on cess the money it's made. Where does that 22-23 lakh crores goes? Why is it not shared with the state? The 40% shared with the state excludes the central taxes on petrol. Why aren't you doing that? Whose money is that? So the right for states to fight for their physical survival is a fundamental right in our constitution. Okay, so you're saying this is not a shoot and scoot model कि पहले आज promise करो कल का कल देखा जाएगा. No, in fact, states that do well are non-BJP states. States that do badly, even in Niti Aayog, are BJP governed states. Okay, it's a sustainable model. Sanju Verma.
Thank you. First and foremost, I have tremendous respect for Neerja Chaudhary ji, and she had some kind words for me. तो उनके कहने पर a very happy birthday to Rahul Gandhi. Now let me come to the more important. Let me come to the more important bit. I think, Padmaja, I always say that apart from the chemistry with the audience, apart from numbers being in your favor, apart from all this, a good politician is somebody who can sell hope. A good politician is somebody who actually walks the talk about the idea of an aspirational India. And I think there Narendra Modi scores. Fine, we've had a setback in Uttar Pradesh that has been dissected threadbare on various debates and will continue to be dissected until we resolve and find out where we sort of fell apart in terms of getting our numbers together. But be that as it may, you cannot take away from the fact that more than 34 lakh crore has been disbursed via direct benefit transfer by the Modi government in the last 10 years. You cannot take away from the fact that today India is by and large ODF. You cannot take away from Narendra Modi the fact that more than 4 crore houses have been built for the poorest of the poor in rural and urban India. You cannot take away from the fact that more than 3 lakh crore has been disbursed directly into the bank accounts of more than 11 crore farmers under the PM Kisan scheme. Okay. You cannot take away from the fact that under the Jan Aushadhi scheme, which by the way was launched by Congress in 2008 and remained a non-starter, today you have close to 10,700 Jan Aushadhi Kendras where senior citizens get medicines which are What's your 95% cheaper compared to market prices. My point is this: you spoke about the common man, Padmaja, and I think that is where the Labharti model of Prime Minister Modi, which focuses on the common youth, men, women, farmers, marginalized, poorer sections of the society, Dalits, Adivasis. Today we have a Dalit or a lower caste, pardon the phrase, Chief Minister in Odisha. You have the first Adivasi President in Draupadi Murmu ji. You have an OBC who's the Chief Minister in Madhya Pradesh. So BJP walks the talk when it speaks about inclusivity. राहुल गांधी सिर्फ भाषण देते हैं. Inclusivity के नाम पर आपने कितने मुसलमानों को टिकट दी? Because you say that Muslims are your natural. Okay, so if it comes down to a personality contest, let's see how the two personalities measure up in terms of their strike rate. Talking simply of these people, Varun Purohit, as campaigners. Rahul Gandhi campaigned in 61 seats in the 24 Lok Sabha elections, which was actually 1/3 of the number of seats that the Prime Minister campaigned in. Even at his age, he went to 183 seats and he campaigned on them. Rahul Gandhi did rallies, roadshows in 61 seats. How many did the Congress, the BJP and the NDA win? Let's take a look at that figure. If we can move a little quicker on this, please. Of these, out of 60 plus seats that Rahul Gandhi campaigned on, Congress won 19 of the seats that PM campaigned on. BJP won 94. NDA and India were at 8 each. So the strike rate of Modi versus Rahul Gandhi was, if we can move on quickly to the strike rate for both individuals was 44.26% and 55.73%. पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट में अभी भी नरेंद्र मोदी बहुत आगे हैं. जस्ट द शेयर नंबर ऑफ सीट्स दैट ही कंटेस्टेड, दैट ही कैंपेन्ड ऑन, एंड उसमें उनका कितना स्ट्राइक रेट था. वरुण पुरोहित. पद्मजा जी, 2-3 बातें भी इतने डिस्कशन हुआ. 2029 तक सरकार चलने वाली नहीं, इलेक्शन पहले होगा, मिड टर्म पोल होगा, आप ध्यान रख लीजिए इस बात का. दूसरा, राहुल गांधी का सस्टेनेबल मॉडल की जो बात करी आपने, हमारी सरकार थी मनरेगा लाएम, मनरेगा सस्टेनेबल था, उससे देश चला, रूरल इकोनॉमी चली. उसके अलावा भी इन्होंने बात करी आयुष्मान योजना की, हेल्थ कार्ड जो चिरंजीवी योजना हेल्थ मॉडल था. पे कीजिए ना, अभी आप फिर पुरानी बात पे जाएंगे, फिर हम चलते रहेंगे इन राउंड सर्कल. स्ट्राइक रेट की बात कीजिए, पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट. अरे स्ट्राइक रेट पे भी आ रहा हूं. स्ट्राइक रेट जो मैंने कहा ना, नरेटिव ऐसा क्रिएट, जो क्रिकेट मैच तो है नहीं, पॉलिटिक्स है. स्ट्राइक रेट क्या होती है? कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के बाद रिवाइव करी कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में. हिमाचल प्रदेश से जेपी नड्डा जी आते हैं, इनके अध्यक्ष से क्या हुआ, फिर उनकी भी स्ट्राइक रेट जोड़िया. तो ये हम इस जो नरेटिव 10 साल से मोदी जी के काल में शुरू हुआ है, उस पर नहीं जाना चाहते. फिर अटल जी अडवाणी जी का स्ट्राइक रेट क्या था, इंदिरा राजीव गांधी जी का क्या था. दूसरा भी एक प्रश्न उठा कि लीडर ऑफ अपोजिशन का, इंदिरा जी भी नहीं बनी थी, सीएम स्टीफन को बनाया उन्होंने. तो ये कौन सी बात है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बने तो ही राहुल गांधी सक्सेसफुल. ये जो नैरेटिव्स है ना,
कि भाई ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, सारे ज्ञान कांग्रेस को देना चाह रहे हैं। उसमें मैं नहीं जाना चाह रहा हूं, उसमें हमको जरूरत भी नहीं है जाने की। ठीक। और सस्टेनेबल मॉडल जब आएगा जब केंद्र की सरकार होगी, क्योंकि जो टैक्सेशन है देश का उसका केंद्रीकरण हो चुका टैक्सेशन का, तो जो केंद्र सरकार होगी उसका ही मॉडल चलेगा। हम केंद्र सरकार में आएंगे तो जैसे मनरेगा चिरंजीवी योजना लाए, पूरे देश में चलाएंगे उस मॉडल को। ठीक है, द हमको Rahul पूंजीवादी model, मॉडल the नहीं Rahul चलाएंगे। model, you'll see it at work when you make a government at the center. Well, best of luck to everyone trying. Happy birthday again. I'm out of time, so I'll thank all gentlemen, Neeja Chaudhary, Sanju Verma, for joining me.